अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। क्या बोलते हैं, दिवाली की छुट्टी होगी अच्छे से? पढ़ाई किए कि टाइम पास किए? दोनों भी, पढ़ाई भी किए सर। हाँ, पढ़ाई भी की, आराम भी किया था। वैसा तो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम पोस्टपोन हो गया था ना? हाँ चलेगा। हाँ मैं सर। देखिए ना, कॉलेज शुरू होने के बाद। अच्छा सुनो, 23 से कॉलेज शुरू होने वाला है। 23 तारीख को 1 बजे से कॉलेज है। बराबर आने का सबने। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सर क्या हुआ, कुछ पूछने का? नो सर। चलो आधा पौन घंटा जरा ध्यान से देखो। 1 बजे तक लेंगे। 1 बजे केमिस्ट्री का लेक्चर है ना? मैथ्स का, ज्योग्राफी। हाँ ठीक है। ज्योग्राफी है सर। किसका वो ऐसा है ना, आप अल्टरनेटिव देखो। लेसन नंबर 1 से 8 तक अपना हो गया था। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे। तो उसमें देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये लेसन नंबर 9 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले किरचॉफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क देखे थे। किरचॉफ के 2 लॉ है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, right, that is called current law. सुनो, the algebraic sum of the currents at a junction is 0 in electrical network. ये था किरचॉफ फर्स्ट लॉ। उसके बाद किरचॉफ सेकंड लॉ देखे थे। क्या था? the algebraic sum, see, the algebraic sum of the potential differences. potential difference मतलब product I into R, product of current into resistance. Algebraic sum of the potential differences and the electromotive force EMF in a closed loop is always 0. इसका साइन कन्वेंशन देखे थे आपने। मतलब ये जैसा लूप है, देखो ये लूप है, ऐसा जा रहे हैं आप, ए बी सी डी, ऐसा लूप ट्रेवर्स कर रहे, ऐसा लूप ट्रेस कर रहे। अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा हुआ तो वो करंट निगेटिव। अगर वो जो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे ये अपोजिट जा रहा I2, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव IR। ऐसा साइन कन्वेंशन भी देखे थे, ठीक है? अब अगला पॉइंट अपने को स्टार्ट करना था, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने, दैट इज व्हीटस्टोन्स ब्रिज। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस पर अपने को प्रैक्टिकल्स करने के, लैब में इस पे 2 प्रैक्टिकल करने के, व्हीटस्टोन्स ब्रिज। तो ये व्हीटस्टोन्स जैसा नाम है, देखो यहाँ लिखा हुआ है चार्ल्स व्हीटस्टोन, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है, जो कब से कब तक इसका पीरियड यहाँ दिया हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज वाज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन। क्यों डेवलप किया उसने? टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, एप्लीकेशन क्या है? अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कैलिब्रेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर, एमीटर एक्सेट्रा, राइट? अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में एक्चुअल में क्या रहता, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो हिसाब से देखो। यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें 4 रजिस्टर है, रजिस्टर P Q R S। ये जो शेप बना, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल ABCD। यहाँ पर एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इधर भी ब्रिज दिख रहा है, इसलिए इसको उसने नाम दिया ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो क्या रहता, 4 रेजिस्टेंसेस PQRS are connected to form a quadrilateral ABCD as shown in the figure। अब इसमें बैटरी कैसी लगी हुई है, देखो A B C D क्वाड्रिलैटरल है।
ए और सी अपोजिट पॉइंट है, आमने सामने के। ए और सी के बीच में देखो एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है और एक की है। बैटरी मतलब सेल, जैसा रेडियो में या तो अपने वाटर हीटर में यूज करते सेल। ये बड़ी लाइन मतलब पॉजिटिव, छोटी लाइन मतलब निगेटिव। ये 9वीं 10वीं में था आपको। तो ये एक सेल है जिसका ईएमएफ, जिसका वैल्यू है ई। यहाँ एक की लगा हुआ है, की सर्किट ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता, ठीक है। तो ये की लगा हुआ है उसके ए और सी के बीच में। ए को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है और सी को निगेटिव पोटेंशियल दिया है। अब उसके बाद दो अपोजिट पॉइंट्स है बी और डी, है ना। बी और डी के बीच में लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर, राइट। गैल्वेनोमीटर क्या रहता, गैल्वेनोमीटर जैसा आपने देखे हुए लैब में एमीटर रहता, वोल्ट मीटर रहता, वैसा गैल्वेनोमीटर इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. It is a meter to measure current as well as voltage. That galvanometer is connected here and this arrow shows the needle. Galvanometer मतलब ऐसा एक मीटर रहता जिसमें कैलिब्रेशन क्या रहता, बीच में 0 रहता, इधर 10 20 30, इधर भी 10 20 30 और एक ऐसी नीडल रहती। ये नीडल इधर जाएंगी, 10 20 जो भी रीडिंग रहेगा या तो इधर जाएंगी, और गैल्वेनोमीटर को किधर भी कनेक्ट नहीं करेंगे तो नीडल सेंटर में 0 पर रहेंगे। दिस गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड हियर, राइट। नाउ सी व्हेन की इज क्लोज, व्हेन यू क्लोज द की मींस व्हेन यू स्टार्ट द सर्किट, current will start flowing through this cell. Positive current will start, see I is the current, I यहाँ से निकल रहा है, I will come to point A. At point A there are two branches, one is going upward, second is going downward. So this current I is divided into two parts. See I1 flowing through P, I2 flowing through S, right. See I1 is the current through P and I2 I1 is the current through P and I2 is the current through S. Now see this I1 at this point, some part is flowing through G, some part is flowing through Q. So this I1 is again divided IG. See IG means the current flowing through G, this direction, and the remaining current, remaining means I1 minus IG is flowing through Q. Similarly at this point I2, you will get additional current IG, it will become I2 plus IG, which is flowing through R, right. So this is the circuit, it is written here, let IG be the current flowing, let IG be the current flowing through the galvanometer. So the current flowing through Q and R are, current flowing through Q is I1 minus IG and through R is I1 plus IG. It is written here in the diagram. Now one more equation you can write, I is equal to I1 plus I2, because I is divided into two parts, first is I1, second is I2. Now we will use Kirchhoff's second law. Applying Kirchhoff's second law, Kirchhoff's voltage law in the clockwise sense. This is the loop A B D A. See A B D A. You are going in this direction. You are tracing the loop in clockwise sense. So you can write three equations. First, current I1 into P. See I1 into P with negative sign. Why negative sign? Because current is flowing in the same direction in which you are tracing the loop. Current is negative. Second, IG into G. See IG into G, again it is given negative sign. Current is flowing in the same direction in which you are tracing the loop. And third current is I2 into S. Now this time it is taken positive because it is flowing in the opposite direction. So first equation you get minus I1P minus IGG plus I2S is equal to 0. Now similarly, second loop BCDB. See BCDB. Now in this direction, again clockwise sense.
Again, three currents are flowing. Which three currents? First, I1 minus G into Q. I1 minus G into Q with negative sign, same direction. Again, I2 plus G into R with plus sign. And third, Ig into G with plus sign according to sign convention of Kirchhoff's second law. So you got three equations, 9.3, 9.4, 9.5. Using these three equations, you can calculate any unknown resistance. Can you listen? आवाज आ रही है नुसरत? समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. मदीना? Yes, sir. ओके, ठीक है, फिर समझा यहाँ तक? अब देखो इम्पोर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट कंडीशन बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो, अपने को प्रैक्टिकल भी करना है। ये जो गैल्वेनोमीटर है जी, उसमें से करंट फ्लो हो रहा आई जी। अगर ये आई जी जीरो रहेगा, आई जी मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इफ दिस इज जीरो, गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी रिफ्लेक्शन। देखो ये जो जीरो दिख रहा है, तो यहाँ क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। Galvanometer deflection will be zero when the current flowing through the galvanometer is zero. So zero, in other words, you can say null, N-U-L-L. Null means zero. Galvanometer is showing null deflection. If the galvanometer is showing null deflection, the circuit or the bridge is said to be balanced. The bridge is said to be balanced. ठीक है, तो देखो इम्पोर्टेंट कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, ए स्पेशल केस ऑकर्स व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो. इन दिस केस द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड एंड द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग इज आईजी इज जीरो. एमसीक्यू में भी आता, इन द बैलेंसिंग कंडीशन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, आईजी इज जीरो. अब आईजी जीरो, ये वैल्यू ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. फर्स्ट इक्वेशन दिस, इसमें देखो आई जी का दिख रहा है, ये सेंटर का आई जी, ये जीरो हो जाएगा. इसको इधर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों टर्म पॉजिटिव. तो इक्वेशन आएगा आई वन पी इज इक्वल टू आई टू एस. आई वन पी इज इक्वल टू आई टू एस. सेकेंड इक्वेशन, इसमें भी आई जी का वैल्यू जीरो डालो. देखो ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ इतना पार्ट जीरो होगा, इतना पार्ट जीरो होगा. तो इक्वेशन क्या आएगा, माइनस आई वन क्यू, सी माइनस आई वन क्यू प्लस आई टू आर इज इक्वल टू जीरो. तो आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू आर, राइट? These two equations 9.6, 9.7 you got. Dividing equation 9.6 by 9.7, ये दोनों का डिवीजन करो. देखो this divided by this, if you divide, I1 will cancel, this I2 will cancel. What remains is P upon Q is S upon R. S upon R. Important condition. This is called balancing condition for Wheatstone's bridge. Condition for balancing the Wheatstone's bridge. चार रजिस्टर है, देखो ध्यान से, क्या ये चार रजिस्टर है, P, Q, S, R. तो फर्स्ट रजिस्टर डिवाइड बाय सेकंड, थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ. इसमें सीरीज याद रखो, P अपॉन Q. देखो P इधर है, Q इधर है. S अपॉन R, S इधर नहीं है, S यहाँ लेफ्ट में, S अपॉन R. किसको डिवाइड करने का, इससे इसको नहीं करने का, S अपॉन R, S डिवाइडेड बाय R. ये कंडीशन याद रखो. दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग ऑफ Wheatstone's bridge. P upon Q is S upon R. This condition is satisfied only when Ig is equal to zero, means galvanometer is showing zero deflection, or you can say galvanometer is showing null deflection. N-U-L-L, null means zero. Now from this balancing condition, if any three resistance are known, the fourth resistance can be determined.
एक मिनट रुक जाओ, कॉलेज से फोन आ रहा है। हेलो, लेक्चर चल रहा है सर ऑनलाइन। हमें लगा था फिर देर। Okay, if three resistance in the bridge are known, the fourth resistance can be determined. Now this is Wheatstone's bridge. अब अपने को लैब में प्रैक्टिकल कैसा करने का देखो, ये ब्रिज अपने नजर के सामने रखो। इधर है P, Q, S, R, चार रेजिस्टेंस है। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है, A और C के बीच में सेल लगा हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस, ये ब्रिज और ये सर्किट सेम है, ऐसा अगर मैंने बोला तो कैसा सेम है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बहुत सारे एप्लीकेशन है। अब व्हीटस्टोन्स ने उसका ब्रिज बनाया, उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाइड पार्ट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। क्या नाम दिया उसको, मीटर ब्रिज। इट इज मॉडिफाइड एंड नेम्ड एज मीटर ब्रिज, राइट। अब क्यों मीटर ब्रिज नाम दिया, ध्यान से देखो, ये सेम ऐसा कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट अपने लैब में रखा हुआ है जो आपको यूज करना है। अभी ये डायग्राम देख लो, लैब में जब आप देखेंगे उसको तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक ऐसा बड़ा लकड़ी का बोर्ड है, दिस इज ए वुडन बोर्ड approximately 1 meter in length. On that wooden board, see, this is a meter scale attached to the board, and to this meter scale, this is a wire of length 1 meter. ये जो मेरी पेंसिल घूम रही ये 1 मीटर लेंथ का वायर है। 1 मीटर कैसे समझ रहा, बराबर मीटर स्केल के ऊपर वो वायर अटैच किया है। Now see, this one is a metal strip, L-shaped metal strip, and this is second L-shaped metal strip. Means there are two metal strips of L shape to which this 1 meter length wire is attached. There is one more metal strip, this one, it is attached here. So A is starting point of the wire, B is end point of the wire, C is this common point of these two, then this is D. Now see, due to this metal strip, what happens? There are two gaps created. इसमें दो गैप क्रिएट हो गए। देखो, एक मेटल का स्ट्रिप है, ये दूसरा मेटल का स्ट्रिप है, ये तीसरा स्ट्रिप है। ड्यू टू दिस टू गैप्स आर क्रिएटेड। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट गैप, LG. दिस इज कॉल्ड राइट गैप, RG। लेफ्ट में इसलिए लेफ्ट गैप, दिस इज राइट गैप, RG, दिस इज पॉइंट C. Now see, from this point C, a wire is connected to the galvanometer. Galvanometer, as you know, it is a meter which can measure current. Galvanometer is having two screws to connect two wires. One wire is connected to point C and other wire is connected to J. Now see, what is this J? This J is called jockey. J को बोलेंगे jockey. It is something like a screwdriver. स्क्रूड्राइवर जैसा एक पार्ट है, उसको कनेक्ट किया हुआ सेकंड वायर J, जॉकी। लेफ्ट गैप, इन दिस लेफ्ट गैप एन अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड X. In the right gap, a known resistance or resistance box is connected, which is denoted by R. Now this is the jockey J. Again see, further the circuit is from point A. See, from point A, positive of the battery is connected. Negative of the battery is going to key. Second terminal of the key is going to rheostat, and the variable terminal of the rheostat is going to point B. In this manner, the circuit is connected. So remember, you have to perform a practical on this experiment. All these connections you have to do by yourself in the exam as well as in the practical performance. So you remember the circuit. In the left gap, you connect an unknown resistance. In the right gap, the resistance box is connected, and key and this battery rheostat are connected in this manner. This is the rheostat. Rheostat is something like this. This is the symbol. It is variable resistance. The resistance you can vary.
Similarly, resistance box, it is a box having large number of keys. This box, there are so many keys and values are written on the keys. For example, 100 ohm, 200 ohm, 1000, 10,000, such values are written on the keys. If you remove one key from this box, which is written, suppose 100 ohm, means 100 ohm resistance is connected in the right gap. So you can choose the resistance from the resistance box. This is the unknown resistance for which you have to determine the value X. Now, see how you have to perform the experiment. Take out one key from the resistance box, for example, 100 ohm. Okay, this is the galvanometer. As you know, this is the calibration of the galvanometer. Central point is 0, then 10, 20, 30 towards left, again 10, 20, 30 towards right, and this is the needle to show the reading. The needle is on 0 when you don't connect it anywhere. Okay, take the jockey in your hand. Again listen, jockey, something like the screwdriver. Take the jockey in your hand and touch it at point A. Listen carefully, you have to do all these things practically. Touch the jockey at point A. As soon as you touch it here, the reading in the galvanometer will be like this. Towards extreme left. The needle will go towards extreme left. Now take out the jockey and touch it at point B. If you touch the jockey at this point, the reading in the galvanometer will be extreme right. Okay. If galvanometer is showing such readings, then you can say your connections are correct. You can proceed on to perform the experiment. Okay. So now you touch the jockey to different points or along the wire and find a point D for which galvanometer is showing zero deflection or null deflection. Listen carefully again. There is a point D on the wire. When you touch the jockey to point D, galvanometer will show zero deflection. Right? Means galvanometer is showing zero deflection, means the circuit is balanced. Now when the circuit is balanced, immediately you can say the balancing condition is satisfied. What is the balancing condition? Previously this is P, this is Q, this is R, and this is S. Balancing condition is P upon Q is equal to S upon R. So P is X. See this one, balancing condition. X upon R, right? X upon R is equal to RAD upon RDB. Now, what is RAD? See, A to D. This much length of the wire is A into D, denoted by LX. And this much length, D into B, denoted by LR. So, resistance of this length is denoted by RAD. And resistance of this much length is denoted by R in dB. This is suffix. Now RAD means what? You know this formula in standard 10. Resistance R, resistance of the wire is equal to rho L upon A. This rho is called, yes, rho is called specific resistance. A is area of cross section and L is length of the wire. In standard 10, you have studied that resistance of the wire is directly proportional to length of the wire and inversely proportional to area of cross section of the wire. That directly proportional to is made is equal to taking one constant, that is rho. Okay, so the formula becomes R is equal to rho L upon A. If AD is the suffix here, same is here. Similarly, R is equal to rho L upon A. dB is the suffix. You substitute these two values RAD and RDB in this formula, you will get X upon R is RAD upon RDC is equal to rho L X upon A divided by rho LR upon A. This AA will cancel, rho will cancel, you will get X upon R is LX upon LR. So simple. LX means the length of the wire AD. LR means length of the wire DB. So
you take r towards right, you will get x is equal to Lx upon Lr into r. From this formula, you can find the unknown resistance x. यहाँ जो connect है, this resistance is unknown to us, and you can find the value of that unknown resistance using this formula. X is equal to Lx upon Lr into r. Now, knowing r, Lx and Lr, value of unknown resistance can be determined. See, R means resistance taken out from the resistance box. Suppose 100. You can put value of R as 100. Then Lx, this much length. For example, 40, 45, 50, whatever it may be. Lx and Lr is again, if this is 50, this is 50. If this is 40, this is 60. Right? If this is 35, this is 65. So that total is 100. So you remember this important formula that we have to use in the lab to perform an experiment using Wheatstone's meter bridge. Okay. Now we will solve one simple numerical on this so that you can understand and we can proceed. See example 9.5. Two resistances, see 2 ohm and 3 ohm are connected across the two gaps of the meter bridge as shown in the figure. Two resistors, see this is 2 ohm, this is 3 ohm, they are connected in left gap. Left gap is 2 ohm, right gap is 3 ohm. This is the galvanometer and this is the wire. Okay, calculate the current through the cell when the bridge is balanced. What you have to find? Current I flowing through this cell when the bridge is balanced, and also find the specific resistance of the material of the meter bridge wire. What is given? Resistance of the wire is 1.49 ohm and diameter is 0.12 centimeter. Now see, when the bridge is balanced, see on your screen you can read running out of time, 10 minutes are left. But when you exit automatically, you have to join again so that we can complete this point. Okay, getting me or not? Shifa? तबस्सुम समझ रहे? Yes, sir. ठीक है. तबस्सुम को पूछे तो मदीना बोल दे रहे बीच में. तबस्सुम का है? Okay. When the bridge is balanced, the resistances are in series. जब ये bridge balance होगा, ध्यान से देखो. When the bridge is balanced, means the current through galvanometer is 0. No current is flowing through this G. Means these two resistances are in series. If they are in series, you can directly add them. 2 plus 3 is equal to 5. Okay. R1 is the resistance of the wire which is given. ये wire का resistance दिया हुआ है 1.49 ohm. These two are in parallel. See, this R1 plus R2 or this one R, both are in parallel. You can use the formula where resistance is in parallel. The formula is Rp, R1 R2 divided by R1 plus R2. Right? R1 R2. What is R1? 1.49. R2 5 divided by 1.49 plus 5. If you solve this, you will get 1.15 ohm, which is the resistance of this entire bridge. So you can find the current once you know the resistance. Formula for the current according to Ohm's law is V is equal to IR. I is E upon R. I, current, is E upon R. E is given to, see in this formula, see E is given 2 ohm. Sorry, current 2 volts. It is written in the diagram. See, value of EMF of the cell is 2 volts. 2 divided by this resistance, you will get 1.74 ampere is the current flowing through the wire of the meter bridge. Now, second thing you have to find is specific resistance of the wire. The formula you know, RA upon L. Right? Rho is equal to RA upon L. Instead of A, what is written? Pi R square. Area of the wire, area of the circle, you know, wire is circular. Area of the circle is pi R square. So, L is 1 meter, meter bridge,
L is 1 meter, resistance is diameter upon 2, it is given 0.12 upon 2, 0.06. Then capital R is 1.49. You can substitute values, these values in R. You will get rho is equal to R, see 1.49, pi 3.14, then R square. R square means radius square, radius is 0.06 centimeter. If you convert it into meter, 0.06 multiplied by 10 raised to minus 2 square divided by 1. You solve this using log table which you have learned in standard 11. If you solve this, you will get 1.68 into 10 raised to minus 6 ohm meter. Right? So this is the meter bridge, Stone's bridge, then its application, then meter bridge. There are few applications of this meter bridge. See, the Stone's bridge is used for measuring the values of very low resistance precisely. You can accurately find the value of resistance using meter bridge. Similarly, we can also measure the quantities such as galvanometer, resistance, capacitance, inductance, impedance using Stone's meter bridge. So this you have to perform in the laboratory. Okay, I will show you one book that you have to purchase. एक बुक दिखाना, मैं ये जाके मेन रोड से खरीद लो. See this one, mirror image आ रही है, but see, physics practical notebook. Just a minute. See this one, physics is written here, physics practical notebook standard 12, on which a photo of textbook is shown here. This is a textbook. Actually, this is a practical book, right? Physics practical handbook. देख लो अच्छे से, ये बुक, यहाँ एक बच्चा और एक बच्ची बैठ के पढ़ाई कर रहे, बाल भारती का सिंबल है, ये सिंबल देखने का. बुक की कीमत है पीछे लिखी हुई 91 रुपीज. ये बुक मेन रोड पे एमजी रोड पे जाओ, वहाँ भारत बुक डेपो में अवेलेबल है. ठीक है, भारत बुक डेपो में प्रैक्टिकल का 12 का फिजिक्स का हैंडबुक अवेलेबल है, वो जाके वहां से खरीद लो. बाकी सब्जेक्ट का होगा तो वो भी ले लो, लेकिन ये कॉलेज छोड़ने से पहले हैंडबुक और प्रैक्टिकल बुक ना, क्या बोले, हैंडबुक और प्रैक्टिकल बुक ना सेम है, एक ही. हैंडबुक इस पर लिखा हुआ है प्रैक्टिकल नोटबुक, राइट? प्रैक्टिकल नोटबुक इज रिटन ऑन दिस, दैट यू हैव टू सी. Okay, standard 12. See, name of the student, name of junior college, all that you have to write on that. समझ में आया? ये बुक जाओ, तुम जाओ, तुम्हारे अब्बा को, भाई को भेजो, इसको ही भेजो, ये बुक खरीद के चाहिए प्रैक्टिकल के लिए मुझे, पहले दिन 91 रुपीज का प्राइस है. और अगले लेक्चर से सुनो, जब भी लेक्चर में बैठेंगे अपने हाथ में टेक्स्ट बुक लेके बैठो, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, पेज खोल के. जो चीज मैं ऐसा हाईलाइट करूंगा वो आपने क्या करने का, अंडरलाइन करने का पेंसिल से. ठीक है, जो चीज मैं हाईलाइट या अंडरलाइन करूंगा आपने आपकी टेक्स्ट बुक में वो चीज अंडरलाइन करो और वो नोट्स लिखो. क्योंकि जब आप पढ़ने को बैठेंगे तो इतना सारा टेक्स्ट बुक में डिटेल में दिया हुआ है, ये पूरा डिटेल में इतना पढ़ते बैठेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो यू अंडरलाइन दैट व्हाट आई एम शोइंग. ठीक है, ये पार्ट यहाँ से समझ में आया. अब 3 मिनट दिखा रहा है टाइम, रिमेनिंग टाइम 3 मिनट, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने का अपने को. 3 मिनट के बाद देखो यहाँ पार्टिसिपेंट्स 24, 25 सबके सब वापिस आओ और 10-15 मिनट लेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट. जैसा आपने पोटेंशियोमीटर देखे वैसा और एक, जैसा स्टोन्स मीटर देखे वैसे और एक चीज देखने का अपने को, that is called पोटेंशियोमीटर. इस पर भी प्रैक्टिकल करना है दो, right? So in this lesson we have to perform 4 practicals, 2 practicals from Stone's meter bridge and 2 practicals for potentiometer. Now what is potentiometer? पोटेंशियोमीटर क्या रहता,
तो देखो एक ऐसा लकड़ी का बोर्ड रहेगा, दिस इज वन वुडन बोर्ड इन लैब, यू कैन सी। लास्ट ईयर तक ये पॉइंट जब क्लास में पढ़ाता था मैं, तो ये सब चीजें क्लास में दिखाने के लिए लेके आता था मैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता था। तो पोटेंशियोमीटर क्या रहता है, एक लकड़ी का बॉक्स है 1 मीटर लॉन्ग, और उस पर ऐसी वायर लगी हुई, देखो 1 2 3 and this is 4. This is connected, this is connected, this is connected, right? This is point A, this is point B. This is potentiometer wire. Okay, यहाँ एक पॉइंट या एक स्क्रू दिया हुआ है, यहाँ एक स्क्रू दिया हुआ है, तो बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। यहाँ पर एक मीटर का स्केल लगा हुआ है, meter scale is attached on this board. This becomes a potentiometer, right? Means potentiometer contains 4 meter length of wire, 1 meter, 2 meter, 3 meter and 4 meter connected. It is continuous. Okay, this potentiometer we have to study for 10 minutes. Don't go, just join again. You will be exited. Yes, sir. In 30 seconds. जाओ मत, सब आओ वापिस। 24. Okay, sir. Any problem, any difficulty, Barina? कैफ? No, sir. ठीक है, देखो अभी वापिस ज्वाइन करो, पोटेंशियोमीटर देखने का। हाँ, sir.